Hi everyone, my name is Dhruv and I scored a 99.79 percentile in ZAT, and in this video I'll be talking about my XLRI HRM interview that happened on 5th of March in Kolkata. Let's start. Before the process even started, हम सब 1 घंटे पहले आ गए थे और हम सब ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। सब ने साइन किया एक पेपर पे और सब बेसमेंट में बैठ गए ताज बंगाल के। और उसके बाद हम सबको एक कार्ड दे दिया विच वॉज द लिफ्ट कार्ड। और उसके बाद हमें बोला कि जब आपको इंस्ट्रक्शन मिले तो ऊपर वाली फ्लोर पे चल जाना। तो थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्शन आया ऊपर वाली फ्लोर पे जाने के लिए, तो हम सब एक क्यू बनाकर ऊपर वाली फ्लोर पे चले गए और हम सब अपने अपने असाइंड पैनल रूम में चले गए जहाँ पे हमारा जीडी होने वाला था। तो हर जीडी में 8 लोग थे और 3 पैनलिस्ट थे। 2 वर द प्रोफेसर्स ऑफ द कॉलेज whom I could identify and one was an alumni। तो ऐसे हमारा इंटरव्यू सेटअप था एंड देन बिगन आवर जीडी। So the topic for our GD was, should employee satisfaction would be given a front seat over customer satisfaction? And the GD went on for around 15 minutes। और GD से पहले हमें 2 minutes सोचने के लिए भी मिला था और हमें राइटिंग पैड भी मिला था लिखने के लिए। So when the GD started, it went on very smoothly। बहुत सारी चांसेस मिली थी बोलने के लिए एंड देयर वर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ साइलेंसेस इन द जीडी एज वेल। जीडी के बीच में हमें लग रहा था कि पैनलिस्ट ने हमें बिल्कुल नोटिस नहीं किया, दे वर जस्ट राइटिंग डाउन समथिंग ऑन पीस ऑफ पेपर विदाउट लुकिंग एट अस। बट इवेंचुअली व्हेन द इंटरव्यू केम वी रियलाइज दैट दे वर इन फैक्ट नोटिसिंग अस एंड राइटिंग ऑल द पॉइंट्स दैट वी वर मेकिंग इन द जीडी। उसके बाद हमारा वैट स्टार्ट हुआ एंड वैट ऑल्सो वेंट ऑन फॉर अराउंड 10 minutes आई वुड से। और हमें उसके लिए राइटिंग पैड मिला था एंड द टॉपिक वॉज सेम एज आर जीडी। तो वैट खत्म होने के बाद सबसे अपना अपना वो ले लिया, राइटिंग पैड ले लिया एंड देन वी वर सेंट बैक टू द वेटिंग रूम। वेटिंग रूम में जाने के बाद सबको एक एक पीआई के लिए बुला रहे थे, तो माई पीआई नंबर वॉज 3, राइट। तो मुझसे जिन 2 लोगों का पहले पीआई हुआ था, दे सेड द पीआई वॉज वेरी नाइस एंड चिल। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर दैट कि बहुत लाइट पीआई हो रहा है। एंड देन केम माई चांस फॉर पीआई। तो आई वॉकड इन टू द इंटरव्यू रूम। तो जिन 2 लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था वो मुझे कॉलेज में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ाते हैं इस वक्त, और एक एलुमनाई भी था। सो दीज वर द 3 पैनलिस्ट्स इन माई इंटरव्यू रूम। सो आई वॉकड इन द इंटरव्यू रूम एंड आई सैट डाउन। बैठने के बाद दे आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। तो ये मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था तो मैंने बता दिया। तो मेरे इंट्रोडक्शन में आई हैड मेंशन्ड कि मैंने फ्रीलांसिंग किया था 1 साल। बट फिर भी उन्होंने पूछा, वाई डू यू हैव 1 year ऑफ ड्रॉप? तो आई एक्सप्लेन टू देम दैट आई वॉज फ्रीलांसिंग एंड आई वॉज एंजॉइंग द वर्क, सो आई डिसाइडेड टू हैव अ 1 year ऑफ ड्रॉप। तो फिर उन्होंने पूछा कि वाई डिड यू चूज फ्रीलांसिंग ओवर प्लेसमेंट्स? सो आई टोल्ड देम ऑनेस्टली दैट आई वॉज अर्निंग मोर थ्रू फ्रीलांसिंग देन आई वुड हैव थ्रू एनी प्लेसमेंट थ्रू माई कॉलेज। Since my UG was not in such a great field, I would have earned more through freelancing. So that is what I mentioned. So the professor, the male professor, looked at me and said, what file are you carrying? सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू समथिंग अबाउट द फाइल। तो मैंने एक फ़ाइल प्रिपेयर करी थी जिसके अंदर मैंने अपने फ्रीलांसिंग के सर्टिफिकेट्स, अपने फ्रीलांसिंग के वर्क, थोड़े से स्केचेस और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें डाली थी, एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग एल्स, टू प्रेजेंट टू द इंटरव्यूअर। आई थॉट कि कोई पोर्टफोलियो या रिज्यूमे कुछ लेकर जाना होता है। तो उसने बोला कि क्या फाइल है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया फाइल के बारे में एंड देन ही आस्क्ड मी फॉर द फाइल। तो आई हैंडेड हिम द फाइल और उस फाइल के अंदर एक पेन भी था। नाउ रिमेंबर दिस बिकॉज दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेटर पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। सो मैंने उसको फाइल दे दी एंड दैट इज हाउ माई इंटरव्यू स्टार्टेड। So now ma'am asked me that why am I in an HRM interview if BM was my preference? अब जो जैट का फॉर्म था उसमें मैंने HRM प्रेफरेंस भरा था। तो मैंने बोला कि मैम यू कैन चेक माई फॉर्म, बिकॉज वो जो फॉर्म होता है वो पैनलिस्ट के पास होता है। तो मैंने बोला मैम यू कैन चेक माई फॉर्म, आई हैव पुट HRM एज माई प्रेफरेंस, आई सी नो रीजन एज टू वाई यू थिंक दैट BM was my preference when my preference was actually HRM. So the professor smiled at me and then asked me that, are you a fresher? And I said, yes ma'am. Then she said that we'll be asking you very difficult questions and it would be very difficult for you to answer them since you are a fresher and have no work ex. But still, try answering the questions even if you are wrong. We just want to know the thought process behind all the questions.
And I said, okay, ma'am, I'll try my best. Then she asked me, according to you, what was the best point that you made in your GD? I told her that I think the best point I made in my GD is that HR is equivalent to marketing and finance department of any company. And then she asked me, why do you think that HRM is equivalent to finance and marketing department of any company? तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो एचआर होता है वो एम्प्लॉयज़ को जब अट्रैक्ट करना चाहता है तो कंपनी की मार्केटिंग करता है एम्प्लॉयज़ को. दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय ब्रांडिंग. And that is the point where the HR acts as a marketing manager. And then I explained it to her कि there is something called rightly staffed, कि कंपनी ना तो overstaffed हो और ना understaffed हो. By making sure of this, the HR makes sure कि कंपनी के फालतू के पैसे खर्च ना हो. क्योंकि अगर overstaffed है तो बहुत सारा अट्रिशन होगा, बहुत सारे लोग छोड़ के जाएंगे कंपनी को, तो बहुत सारा लॉस होएगा कंपनी को. और अगर बहुत कम लोग होंगे तो कंपनी को लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो रिक्रूटमेंट के भी पैसे कंपनी को ही देने पड़ते हैं. तो इवेंचुअली बाय मेकिंग श्योर द कंपनी इज राइटली स्टाफ्ड, द एचआर इज मेकिंग श्योर कि कंपनी के फालतू के लॉसेस ना हो. राइट. नाउ द प्रोफेसर लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड एट मी एंड आस्क्ड मी, in your GD you also said something about measuring the satisfaction of employees. So she asked me, how would you measure the satisfaction of employees? So I told her कि I would not actually go on and measure the satisfaction of employees. In fact, I will create a dispute resolution system जहाँ पे employees openly अपने problems मुझे बता सके as an HR. और इससे ये होगा कि employees जब भी problem में होंगे तब वो complain कर देंगे. और जब employees complain नहीं कर रहे होंगे then I will assume that they are satisfied. So that is what I said. And then she smiled at me. And then the male professor, the FHRM, Foundations of Human Resource Management professor, again took the command of the interview. So the professor now asked me what are the various departments that an HR works in. So I said, sir, talent acquisition, learning and development, then there's training. And I was not aware of rest of them. तो मैंने बोला, सर, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ रेस्ट ऑफ देम, एंड दिस इज द रीजन दैट आई वांट टू परस्यू एन HRM at XLRI so that I can know more about the HR field. So professor asked me, what is the tagline of XLRI? And I told him, for the greater good. And then the professor asked me that what are the values of XLRI? And I told them कि जो values होते हैं XLRI का वो होता है excellence and integrity. Like वो XLRI के लोगों के नीचे लिखा हुआ है. So if you are going for the interview, make sure that you know the values and the tagline of XLRI, right? उसके बाद the professor asked me कि okay, that is all fine, but tell me something that what have you prepared for the interview? And I looked at him and said that, sir, I prepared some BQs for the interview. BQs are basically behavioral questions. Tell me about yourself. Where do you come from? How, like, why did you do this and why did you do that? Those are BQs or HR questions or behavioral questions. So the professor asked me, so you have memorized the BQs? And I honestly told him, yes, sir, I have memorized the BQs. The reason being that these are frequently asked in college interviews, and I did not want to mess them up. Hence, I went on and memorized all of them. So the professor asked me that all the candidates come to us and they have some BQs memorized, some questions memorized, and these are the usual questions that we ask to the candidates. तो हम कैंडिडेट से ऐसा क्या पूछे कि कि वो प्रिपेयर्ड ना हो उसके बारे में और वो ऑनेस्टली सच बता दे, क्योंकि हम इसके बिना कैंडिडेट को जज नहीं कर पाएंगे. सो आई आस्क्ड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट इट, और मैंने सोचा. एंड देन आई सेड, सर, यू कैन आस्क द कैंडिडेट्स अबाउट सम सिचुएशनल क्वेश्चंस. कोई सिचुएशन में डालो कैंडिडेट को और उस सिचुएशन के बारे में पूछो कैंडिडेट को कि वो सिचुएशन में क्या करेगा. सो द फीमेल प्रोफेसर लुक्ड एट मी एंड देन आस्क्ड मी कि अच्छा, तो let me ask you a situational question. But before that, let me ask you, have you ever cheated in your life? And I looked at her and said, yes, sir, I have. Yes, ma'am, I have cheated only once in my life. And then she asked me, describe how the cheating experience was and how you cheated in your life.
सो आई टोल्ड हर कि 11th और 12th में कोरोना था, और 11th और 12th में ऐसा हुआ था कि हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन थे, और हमारा कैमरा भी ऑफ था और माइक भी ऑफ था, और हमें बस क्वेश्चन पेपर दे दिया था एंड वी वर गिवन 3 hours टू सॉल्व द पेपर. नाउ आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, और आई रियली डेंट वांट टू फेल बिकॉज आई हैड नेवर फेल्ड इन एनी एग्ज़ाम इन माई लाइफ अभी तक तो. बट उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आई हैड बिट ऑफ अ प्रॉब्लम क्योंकि मैंने कोरोना की वजह से पढ़ा नहीं था. सो आई गूगल्ड अ फ्यू ऑफ द आंसर्स. So the professor asked me, "Did you pass the exam?" And I said, "No, ma'am. The questions were made such that even if we Googled, we would fail. We had to study to pass the exam. The exam was made in such a pattern." So the ma'am looked at me and asked me, "What did you learn from this?" I told her ki I learned that even if you cheat, uh, it's not guaranteed that you'll pass. You'll only pass through a lot of hard works and small steps towards success. And then she again smiled at me and said, "Very good. That's what we are expecting from the candidates." And then they moved on to something else. So now the male professor asked me, "Ki tell me something about the gig economy." तो मैंने बोला कि मैंने खुद ने फ्रीलांसिंग करी है, तो आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट द गिग इकोनॉमी. तो गिग इकोनॉमी क्या होता है? गिग इज बेसिकली कि आप फुल टाइम कोई कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, बट आप कुछ काम कर रहे हो और कंपनी उसका पेमेंट दे रही है. मोर लाइक फ्रीलांसिंग. तो आप फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो कंपनी के, बस आप उनके लिए थोड़े थोड़ा टास्क बेस्ड काम कर रहे हो. वो टास्क देते हैं आपको, आप काम करते हो और आपको पैसे मिल जाते हैं. जोमैटो राइडर्स, उबर राइडर्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ गिग इकोनॉमी. तो जो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए कोई लॉ नहीं था 2016 से अभी तक. और अभी जो न्यू लेबर कोड्स आए हैं, उसमें गिग वर्कर्स के लिए कुछ नए लॉज आए हैं. तो आई ऑल्सो मेंशन दैट कि अभी तक कोई लॉज नहीं है गिग वर्कर्स के लिए. तो और अभी जो न्यू लेबर कोड्स आने वाले हैं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आए नहीं थे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने बोला कि जो न्यू लेबर कोड्स आए हैं उसमें गिग वर्कर्स के लिए थोड़े से लॉज है. तो द प्रोफेसर आस्क्ड मी अबाउट द 4 न्यू लेबर कोड्स, बट मुझे दो ही पता थे तो मैंने दो बता दिए, विच वॉज द OSHW कोड एंड द सेकेंड वन वॉज कोड ऑन वेजेस. तो मैंने ये दोनों बता दिया, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया दोनों कोड्स का, एंड देन दे मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू. नाउ द प्रोफेसर लुक्ड एट माई फाइल. ही स्टार्टेड स्क्रोलिंग थ्रू माई फाइल, एक एक करके एक एक पेज पे जा रहे थे, एंड देन ही सॉ माई स्केच वर्क. देन ही आस्क्ड मी कि ये स्केच वर्क यहाँ पे क्यों डाला है. मैंने बोला, "सर, आई मेड दीज एंड आई वांटेड यू टू सी दीज, सो आई पुट इट हेयर." देन द प्रोफेसर आस्क्ड मी दैट हाउ इज इट रेलिवेंट फॉर द इंटरव्यू. तो मैंने बोला, "सर, आई थिंक इट एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ माई प्रोफाइल. स्केचिंग इज माई हॉबी एंड आई हैव बीन डूइंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम." तो ये मैंने अपने स्केचेस डाले हैं, एंड ऑल्सो दिस वुड ऑल्सो सर्व एज अ प्रूफ ऑफ माई फ्रीलांसिंग वर्क, क्योंकि ये स्केचेस मैंने फ्रीलांसिंग वर्क के रूप में कंपनीज को सबमिट करे थे. तो द प्रोफेसर लुक्ड एट मी एंड asked me, "How is it even relevant to this interview?" And I said, "Sir, I am very sorry. I thought this would be relevant to the interview. But if you think this is not relevant to the interview, I'm really sorry." And then they moved on. Now comes the last part of my interview. Now, जो alumni बैठा था उसने बहुत देर तक कुछ नहीं बोला था. तो उसने बोला, "Before you go, I want you to answer one simple thing. You have done your UG in computer science." I said, "Yes, I have." Then he asked me, "How can we use AI to make the process of this interview better?" तो मैंने बोला कि कुछ टाइम पहले मैंने NMIMS का इंटरव्यू लिया था, जो AI बेस्ड था. उसमें एक AI था और AI was taking our interview. Then I told him कि we can have a mix of AI plus humans for the interview, wherein an AI is asking the questions and a human is judging them based on the questions AI is asking. द रीज़न फॉर दिस इज कि कुछ कुछ इंटरव्यूअर्स को बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछते हैं और कुछ कुछ को बहुत आसान क्वेश्चंस पूछते हैं. इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी आ जाती है कैंडिडेट्स के बीच में. Using this AI, what we can do is we can make sure that similar level of questions are being asked to the candidates. Now, AI cannot be a good judge for the candidates because some candidates would be less confident, some would be very overconfident, or AI शायद ये catch ना कर पाए, but humans can. So humans can be put there to judge the candidates
while AI can be put there to ask questions from the candidate. और फिर मैंने आगे बोला कि AI can also be used to make lists of the candidates to make sure that जो candidate select हो रहे हैं वो diversity criteria fulfill कर रहे हैं XLRI का. Since it was an HR interview, I thought कि mentioning diversity would help me a lot, and I think it did help me a lot. After that, the panelist told me, "Thank you, have a nice day," and then told me to leave. उसके बाद मैं वेटिंग रूम में गया. I was very sad after my interview, honestly, because I thought my interview did not go well. But actually, I think now when I look back at it, and when I look back at my other interviews, I think this was one of the good interviews I had. I made a few friends in the waiting area as well. So this was my entire XLRI HRM interview experience.